हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोनम्स एक्सप्लेनर्स। आज का हमारा टॉपिक है तालिबान। तालिबान कौन है, तालिबान की क्या आइडियोलॉजी है और करंटली क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है विद इन द तालिबान। सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे बहुत ही ब्रीफ तरीके से। सबसे पहले तो तालिबान की क्या आइडियोलॉजी है, विच वेरिएंट ऑफ इस्लाम आर दे इंस्पायर्ड बाय, इसके बारे में बात करेंगे। So the Taliban are basically an Islamic fundamentalist Deobandi militant movement, और इसके जो अडेरेंस है वो फॉलो करते हैं हनफी स्कूल ऑफ लॉ को, विच इज़ वन ऑफ द मेजर फोर मेजर स्कूल्स ऑफ लॉ विद इन द सुन्नी इस्लाम। आपके जहन में ज़रूर ये सवाल आया होगा कि देवबंद तो शायद भारत में है। तो बिल्कुल, देवबंद जो है वो उत्तर प्रदेश में है, सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है देवबंद हमारी राजधानी दिल्ली से। अब दूसरा सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि क्या सारे देवबंदी जो होते हैं वो मिलिटेंट मूवमेंट्स को प्रोपगेट करते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे विद इन द देवबंदीज ऑल्सो, और सारे के सारे देवबंदी जो हैं वो मिलिटेंट मूवमेंट्स को सपोर्ट नहीं करते। और बहुत सारे ऐसी देवबंदी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया को भी सपोर्ट नहीं किया था। उनके रीजंस क्या थे, उन पे हम कभी बात करेंगे। दैट मेक्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर, एंड आई वांट टू टेक दैट अप आल्सो बिकॉज उसके अराउंड भी बहुत सारी कंस्पिरेसी थियोरीज हैं कि वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान साथ रहें एंड ऑल दैट, पर उसकी असली वजूहत क्या थी कि वो पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करते थे, इस पे एक अलग से हम एक व्लॉग करेंगे। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, आई हैव अ रियली बैड कॉफ टुडे। तो जी, तालिबान की क्या वो किससे इंस्पायर्ड हैं, किस वेरिएंट से, इसके बारे में तो हमने बात कर ली। अब इनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या कॉजेज ये एस्पाउस करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को प्रोपोगेट करते हैं, ये पश्तून नेशनलिज्म को प्रोपोगेट करते हैं। इवन दो द तालिबान आर प्रेडोमिनेंटली अ पश्तून ऑर्गेनाइजेशन, बट तालिबान में आपको दूसरी एथनिसिटीज के लोग भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ओनली पश्तून्स बिकम तालिबान। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अनलर्न द स्टीरियोटाइप्स, सो आई वांटेड टू मेक अ स्पेशल मेंशन ऑफ दिस। फिर तालिबान ट्रेडिशनलिज्म को प्रोपगेट करते हैं कि हमारी पुरानी वैल्यूज अच्छी, आई मीन लाइक द most right wing movements you will see across the world. Not that I'm equating all the right wing movements with the Taliban, but just for the context. और दे आर एंटी वुमेन, ऑफ कोर्स ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बट मेरे हिसाब से तो उनकी जितनी पॉलिटिक्स है, इट्स ऑल सेंटर्ड अराउंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, और दे आर हाईली मिसोजिनिस्टिक। दे आर अ बंच ऑफ मिसोजिनिस्टिक जोकर्स टू बी प्रिसाइज। और वो बहुत ज़्यादा बात करते आपको नज़र आएँगे पश्तून वली के बारे में भी। अब पश्तून वली क्या होता है? पश्तून वली इज़ बेसिकली द कोड ऑफ ऑनर ऑफ पश्तून्स। इट्स द इट्स बेसिकली, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू? हाँ, जैसे आप कश्मीर में सुनते हैं कश्मीरीज़ अपने कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए दे यूज़ द वर्ड कश्मीरियत, द कल्चर ऑफ कश्मीर, द कैरेक्टर ऑफ कश्मीर। इसी तरह से अफ़गानियत भी कुछ होता है, और अफ़गानियत का ही दूसरा नाम पश्तून वली है। It covers the Afghan mannerism, the Afghan way of life, the Afghan food, and everything about the Afghan culture. अब क्या तालिबान में कोई फैक्शंस हैं? तो ऑफ कोर्स जो तालिबान 2.0 है उसमें आपको ब्रॉडली दो फैक्शंस देखने को मिलते हैं। One is the traditionalist side and the other is the pragmatic side. अब जो ट्रेडिशनलिस्ट साइड है उसमें आपको जो ज़्यादा एक्सट्रीम टाइप के लोग हैं वो मिलेंगे। फॉर एग्जांपल द हकानी नेटवर्क and the Mullah Umar side. And then on the pragmatic side, you will see the Doha faction. Now, these were the people who negotiated with the Americans in Qatar. तो अब इन्होंने दुनिया घूम ली है, दे pretty much understand कि अगर इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए, या फिर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको एक लेजिट गवर्नमेंट की तरह ट्रीट करे, तो इनको कुछ
bare minimums hai, they will have to do that. For example, they treat the women right, send them, let them go to school. And that is why this section, which is said to be the pragmatic section within the Afghan Taliban, unke jo log hai, you will often see them, arguing with the other Taliban on the treatment of women and how women should be sent to school. तो ये आपको फैक्शंस लार्जली दो ग्रुप्स में आपको अफगान तालिबान बटे हुए मिलेंगे। वो साइड जो कहती है कि औरतों को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, महरम के बिना तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, इनको स्कूल नहीं जाना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट। And the other side which understands that, not that they have had a change of heart या फिर ये लोग कोई बड़े progressive लोग हैं, it's just that they are smarter. They understand that they will have to do a few things to get the international recognition. अब हम आ जाते हैं एटिमोलॉजी पे। बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानीज को मैं देखती हूँ, वो तालिबान को तालिबानी कहते हैं। बहुत इंडियन यूट्यूबर्स जो पिछले दिनों में अफगानिस्तान जा रहे थे, उन्होंने अपने व्लॉग्स में लिख रखा था, मुझे तालिबानी मिले, मैं 3 तालिबानियों से मिला। तो तालिबानी कोई वर्ड नहीं होता है, द वर्ड इज़ तालिबान। और वेस्टर्न मीडिया में इसको तालिबान लिखा जाता है, एंड दे रीड इट एज़ तालिबान। द एक्चुअल वर्ड इज़ बेसिकली तालिबान, दैट्स हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। एंड since the Taliban movement started as a students movement, इसमें ज़्यादा यंग लोग थे, इसीलिए इन्होंने अपनी मूवमेंट का नाम जो है तालिबान रख लिया। सो द वर्ड तालिब बेसिकली मीन्स सीकर, स्टूडेंट। और जो तालिबान है वो अपने आप को दीन के स्टूडेंट्स मानते हैं, इस्लामियात के स्टूडेंट्स मानते हैं। तो दैट इज हाउ इट बिकेम तालिबान। Okay, the actual word is talib, which means student. The word Taliban is basically the plural noun for the word talib, and that is why when we talk of the group, we should say the Taliban. When we talk of some Taliban fighters, we should say Taliban, because they are a bunch of fighters, they are a bunch of people, so it can't be Talib because it's a singular noun. The plural noun is Taliban, right? So you got it. When we're talking of Taliban as a group, we use a definite article. We say the Taliban. When we are talking of a few Talib fighters, we say Taliban because they are more than one in number. And when we talk of a single Taliban fighter, then we say Talib. यही गलती जो लोग हैं बलोच के लिए भी करते हैं, इवन पाकिस्तानी, मतलब दिल फिटे मुंह पाकिस्तान में रह के इनको ये नहीं पता कि बलोची जुबान होती है। बलोची आर नॉट द पीपल। ये जब बलोच लोगों की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक बलोची मिला था, वो बलोची है। सो बलोची इज द लैंग्वेज ऑफ बलोच पीपल, द आइडेंटिटी इज बलोच। You call them the Baloch, the way you call Britishers the English. Similarly, एक और चीज मेरे ध्यान में आ रही है, yeah, for Afghans, people say Afghani. Afghani is the currency of Afghanistan, for God's sake, guys. The word is Afghan. When you're describing an Afghan person, you call him Afghan, right? Not Afghani. Afghani उनकी करेंसी है। और लैंग्वेजेस अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। पश्तो इज द मेन लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय द पश्तून सोसाइटी। फिर दरी आपको मिल जाएगी, बहुत सारी जुबानें आपको अफगानिस्तान में मिल जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स गेट द एटिमोलॉजी राइट एटलीस्ट। अब मूव करते हैं, व्हाई इज अफगानिस्तान इन अ परमानेंट स्टेट ऑफ वॉरफेयर। तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हाईलैंड्स हैं ना, जो मुस्लिम ट्राइबल रीजन्स हैं, they have always been very, very hostile to statecraft. It won't be wrong if I quote James Scott and say, they are the old masters of the art of not being governed. Especially 3 तरह के गवर्नमेंट्स तो जो ट्राइबल रीजन्स के लोग हैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक वो गवर्नमेंट जिसके पास रिलीजियस लेजिटिमेसी नहीं है, वो गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा टैक्सेस वसूल करे लोगों से, और तीसरी वो गवर्नमेंट जो लोगों को बहुत ज्यादा पुश करे अपनी
ज़िंदगी चेंज करने के लिए, अपने सोशल ट्रेडिशंस चेंज करने के लिए, दे वुड नेवर एक्सेप्ट सच अ गवर्नमेंट। And since, there is an omnipresence of weapons within the Pashtun society, and there is a cultural obsession with honor and prestige, so you will see a lot of recklessness in Afghanistan. एंड दैट इज वाई जब तालिबान ने शुरुआत की थी ना, तो उनके जो जुडिशियल सर्विसेज थी जिसमें वो इंस्टेंट जस्टिस देते थे, मॉब जस्टिस, दैट वाज एन इंस्टेंट हिट विद द मासेस इन अफगानिस्तान बैक इन द डे। अब चीजें बदल चुकी हैं आफ्टर 20 years of American education. The Afghans have come a long way, and that is why Taliban are finding it very, very difficult to govern Afghanistan. People are still resisting. They are not letting kids go to schools. The girl child, they are shooting women in the head. They are doing all sorts of things that a militant movement does. पर उसके बावजूद हम देखते हैं हमारे कुछ यूट्यूबर्स जाते हैं, कोई गोरे यूट्यूबर्स आते हैं अफगानिस्तान में और वो दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं हाउ फ्रेंडली आर तालिबान। आई एम सॉरी, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। तालिबान को ये चीज समझ आ चुकी है कि उनको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। जस्ट बिकॉज दे आर बीइंग नाइस टू यू डजंट मीन दे आर बीइंग नाइस टू द अफगान पीपल ऑल्सो। प्लीज बेयर दैट इन योर माइंड। ठीक है, तो लाइक आई सेड, जो ट्राइबल रीजन्स के जो लोग हैं, दे आर वेरी अवर्स टू द स्टेट क्राफ्ट। इसीलिए जो अफगानिस्तान में हमेशा आप एक लड़ाई की जो सूरत हाल है वो बनी रहती है। अच्छा, 1940s में भी एक ट्राइबल्स की अपराइजिंग हुई थी, और जो अफगान आर्मी थी उसने इंपोर्ट किए एयरक्राफ्ट्स, वेपन्स और पता नहीं क्या क्या, बट दैट सुपीरियॉरिटी ओनली लास्टेड फॉर 30 years। उसके बाद एंटी एंटी कम्युनिज्म रिवोल्ट शुरू हो गए, म्यूटनी शुरू हो गई विद इन द आर्मी, एंड उसके बाद the Afghan Mujahideen got formed. This is when the US got involved. जैसे ही एंटी कम्युनिज्म प्रोटेस्ट रिवोल्ट शुरू हुए अफगानिस्तान में, CIA got involved, और CIA और ISI ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था अफगान मुजाहिदीन, which was the parent organization of the Taliban, by the way। अब ये जो अफगान मुजाहिदीन का जो ग्रुप है, इसको बैक किस किस ने किया था? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बोथ सऊदी एंड ईरान backed it. They came together. China backed it. Israel backed it. Can you imagine? Saudi, Iran, and Israel all back one group. ठीक है? So, in a way आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बहुत गलत भी हुआ है। That everybody literally used it as a laboratory for their own experiments, for their own geopolitical wars। ठीक है? अच्छा, अब ये जो अफगान मुजाहिदीन ग्रुप जो CIA ने ISI की मदद से बनाया, और बहुत सारी कंट्रीज ने लाइक द वंस आई नेम्ड उन्होंने सपोर्ट किया CIA को, ये ग्रुप रेजिस्टेड द सोवियत यूनियन बिटवीन 79 to 89। दे डिफीटेड द सोवियत यूनियन, और फिर उसके 1-1.5 साल के बाद तो सोवियत यूनियन गॉट डिसइंटीग्रेटेड। अब जैसे ही सोवियत को हरा दिया, अब ये जो फाइटर्स जो तैयार किए थे अमेरिका ने और पाकिस्तानियों ने मिलके, दे वर सडनली जॉबलेस कि अब हम क्या करें। 89 में उनकी वॉर तो खत्म हो गई। अब ये वो लोग थे जिनको लड़ने के लिए ही तैयार किया गया था। और अब आप टाइमलाइन देखिए, 89 में ये जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे वो खत्म होती है, और अराउंड द सेम टाइम कश्मीर में जो जिहादी थे वो अपनी आवाज बुलंद करने लगते हैं। शुरुआत में ही 90s की शुरुआत में ही तो एक्सोडस हो गया ना वहां से कश्मीरी पंडित्स का। दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड टू फेस एथनिक क्लेंजिंग। और पाकिस्तानी खुद बहुत बार ये बात मान चुके हैं कि अफगान मुजाहिदीन जो हमारे पास थे, दे वर जॉबलेस, दे वांटेड टू फाइट समवेयर, तो उनको हमने फिर कश्मीर भेजना शुरू किया। टाइमलाइन मैच हो गई। अब कुछ लोग तो कश्मीर आने लग गए सो कॉल्ड अपनी जिहाद करने के लिए। जो पीछे बच गए, दे स्टार्टेड टू रीग्रुप,
और अफगानिस्तान में बाय दिस टाइम द सिविल वॉर हैड स्टार्टेड in 1992, I think. Yeah, the civil war started. By 1994, the Taliban emerged as a big group. They became instantly popular. तब इनका लीडर होता था मुल्ला उमर, the first supreme leader of Taliban. And they got so prominent that within 2 years, they formed a government. One third of Afghanistan was under their control. हाँ, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, वो जो वखान कॉरिडोर, जो पंजशीर का जो इलाका है, जिसका इंडिया से भी बॉर्डर मिलता है, बाय द वे, वी शेयर अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान, इज जस्ट दैट दैट पार्ट ऑफ इंडिया इज अंडर पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन, जिसको हम पीओजे के कहते हैं. वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी. वहां पे अहमद शाह मसूद, जो भारत में जिनको ज्यादातर लोग जानते हैं, नॉर्दर्न अलायंस की वहां पे गवर्नमेंट थी, विच वॉज रिकग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑल्सो as an interim government, as an extension of the Islamic State of Afghanistan. उनको एक interim government का recognition मिल रखा था इंटरनेशनल कम्युनिटी से. ठीक है. एंड ये जो गवर्नमेंट है, ये इसको सारे के सारे जो रीजनल प्लेयर्स थे, मतलब नॉर्दर्न अलायंस को, वो सपोर्ट कर रहे थे. इनको नेटो के जितने मेंबर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे थे. आई मीन ऑफ कोर्स अगर यूएस किसी को सपोर्ट करेगा तो दे ऑल कम अलोंग, राइट. और इंडिया, पाकिस्तान, सब इनको उस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे. और उसके बाद इनकी तालिबान की गवर्नमेंट इन्होंने बना ली 1996 में. इट वेंट ऑन फॉर 5 years. तब भी यही सब हो रहा था वहां पे. लोगों के सर पे गोलियां मारना, उनको मार के उनकी लाशों को लटका देना, और जो प्रीवियस गवर्नमेंट के जो लोग थे उनको उनको पकड़ पकड़ के उनके कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स करना, यही सब हो रहा था तब भी. एंड अफगानिस्तान had become a hotbed of jihadist organizations during the first Taliban rule. और like all of us know, 2001 में 9/11 हो गया. And that's when the US decided कि they had to invade Afghanistan. अब क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस को लेजिट गवर्नमेंट मानता था अमेरिका, और जितनी कोalition फोर्सेस थी या फिर जो नेटो था, वो नॉर्दर्न अलायंस को रिकॉग्नाइज करता था. तो नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलके अमेरिका ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को. 1.5-2 महीने उनको लगे. यूएस की जो फोर्सेस हैं वो एयर सपोर्ट दे रही थी नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर्स को, और जमीनी स्तर पे जो नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर्स थे वो लड़ रहे थे तालिबान से विद क्लोज सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. वो उनको एयर सपोर्ट दे रहे थे. बमबारी यूएस कर रहा था और फाइटर इनके लड़ रहे थे ऑन द ग्राउंड. अब तालिबान की गवर्नमेंट गॉट ओवरथ्रोन. यूएस ने हरा दिया विद द हेल्प ऑफ नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को. अब बहुत सारे लोग जो हैं उस टाइम पाकिस्तान भाग गए. और ये मैं आपसे बात कर रही हूँ 2001 की, सून आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेडेड अफगानिस्तान. अब ये जो तालिबान पाकिस्तान गए, इन्होंने मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही दे फॉर्म्ड अ काउंसिल ऑफ लीडर्स इन क्वेटा इन बलूचिस्तान इन पाकिस्तान. और इसी काउंसिल को आज भी लोग क्वेटा शोरा का नाम देते हैं. अब इन्होंने अपनी काउंसिल ऑफ लीडर्स बनाई, और कुछ ही महीनों में दे स्टार्टेड देयर ऑफेंसिव्स अगेंस्ट द कोalition फोर्सेस इन अफगानिस्तान. ऑफ कोर्स इनकी गवर्नमेंट गिराई थी यूएस ने, चुप कैसे बैठते. They started attacking. Mullah Omar was the supreme leader. Then Taliban के आज तक 3 supreme leaders रहे हैं. First was Mullah Omar. I think he died because of TB. The second supreme leader died in a drone strike, US drone strike. और जो current supreme leader है तालिबान का, हैबतुल्लाह अखुंडज़ादा, वो he's the third, so far.
अब ऑफेंसिव्स इनके शुरू हो गए अगेंस्ट द कॉलिशन फोर्सेस, और मतलब 20 साल में इन्होंने अमेरिकन्स को रेस्ट नहीं करने दी। इनफैक्ट जो लड़ाइयाँ थी ना आपस में, यूएस ने विथड्रॉ तो 2021 में किया है, बट कुछ साल पहले से ही यूएस फोर्सेस, या आई मीन नेटो फोर्सेस के और तालिबान के बीच में कोई आपको ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को नहीं मिलेंगी, ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो नहीं रही थी। दिस वाज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। नो गो ज़ोन्स बन गई थी एक दूसरे के लिए। इन 20 इयर्स द यूएस फोर्सेस couldn't गेट एक्सेस और कंट्रोल ऑफ द होल ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि तालिबान धीरे धीरे पाकिस्तान में जाके वो ट्रेनिंग करते थे, आईएसआई उनकी हेल्प कर रही थी। आईएसआई यहाँ पे आके आईएसआई ने डबल गेम शुरू कर दिया था। ठीक है, वो जो मुजाहिदीन बनाए, जो तालिबान की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो तो आईएसआई ने हेल्प की, उन्हीं से आगे तालिबान बने ना। ये मुसीबत तो सारी वहीं की शुरू की हुई थी, आईएसआई और सीआईए की। बट तालिबान की जो गवर्नमेंट थी फर्स्ट, उसको गिराने में भी अमेरिका की मदद की पाकिस्तान ने, और फिर जब तालिबान भाग के पाकिस्तान चले गए तो तालिबान की भी मदद की। तो डबल क्रॉस यहीं पे शुरू हुआ, जिसकी वजह से आजकल पाकिस्तान को अमेरिका में बहुत गाली भी पड़ती है। उधर से उनकी हेल्प की आपने तालिबान की गवर्नमेंट गिराने में, और इधर से आपने उनको पनाह दी, और आपने उनको पूरा मौका दिया, जहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी ट्रेनिंग दी, इंडोक्ट्रिनेशन की जरूरत पड़ी इंडोक्ट्रिनेशन की, बिकॉज वो तो आपकी यूएसपी है। और वो लड़ते थे अमरीकियों से, और पाकिस्तानीज उनको कोवर्ट सपोर्ट देते थे। अब 20 साल उन्होंने इतना बुरा हाल किया नेटो फोर्सेस का, कि लाइक आई सेड कि उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी। और फिर ऑफ कोर्स द अमेरिकन्स फाइनली रियलाइज्ड अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कि दिस इज बिकमिंग अ वेरी इनकन्वीनियंट वॉर एंड देयर इज नो एंड टू इट। ये लोग हम पे हमले करते रहते हैं, और अब तो ऐसा हाल हो गया है कि इनकी जोन्स में हम जा ही नहीं सकते। सो व्हाट्स द इवन पॉइंट ऑफ बीइंग देयर? ये तो कभी बंद करेंगे नहीं। एंड द तालिबान ऑलवेज यूज्ड टू से, राइट, you have the watches but we have the time on our side, and that's what exactly happened। और यूएस को इवेंचुअली निकलना पड़ा 2021 में, और हालात आज के ये हैं। हम अपनी वीडियो यहीं पे वाइंड अप करेंगे, बट बिफोर दैट I want to draw your attention to this. We started from talking about how Afghanistan has become the graveyard of empires. It's rightly called that, क्योंकि आज भी अगर आप देखें, जंग अफगानिस्तान में बंद नहीं हुई है। तालिबान का कहना था कि नेटो यहां से निकल जाए एंड देन एवरीथिंग इज ओके, वी आर ऑल फाइन, मतलब हम सारे अफगान हैं, हम आपस में अपना देख लेंगे। But you see, the Afghan people are not okay with Taliban today because they've come a long way. Taliban are still where they were. Yes, some of them have evolved, like I said, but the Afghan people have come a long way. They've had 20 years of American education. That's a lot of nurturing. And you cannot expect that to get undone overnight. तो आज भी हालात यही है अफगानिस्तान में। आज भी जंग जारी है। जब तालिबान आपस में नहीं लड़ रहे होते हैं तो वो आईएसकेपी के साथ लड़ रहे होते हैं। जब आईएसकेपी के साथ नहीं लड़ रहे होते तो पाकिस्तानी फौज के साथ उनके स्कर्मिशेस जारी होते हैं, और मासूम अफगान आज भी मर रहे हैं। आज भी वहां पे औरतों को कोई हकूक हासिल नहीं है। और जितना मैं कम बोलूँ इस बारे में, मेरे ख्याल से उतना ही अच्छा है, बिकॉज़ इट्स पर्सनली अ वेरी इमोशनल इश्यू फॉर मी, बिकॉज़ आई हैव अ लॉट ऑफ अफगान फ्रेंड्स एंड आई नो सम ऑफ दीज़ stories really up close. So yeah, let's end the video here. I hope you enjoyed this video or found it interesting. We will talk again very, very soon. I'll come up with another topic, or maybe we will talk about the TTP as to who are these guys, who are these new bullies on the block, who are snatching limelight from all the other insurgent groups active in the AFPAC region. So, yeah,
Bye for now. Take good care of yourself, and we will meet again very, very soon.